डीनोस कनेक्शन, विच एक्चुअली लास्ट सेशन में भी मैंने मेंशन किया था, राइट, कि एनसीबी क्या कर रही है, जबकि 2019 के वीडियोस है जहां पे ही इज एक्चुअली पार्टनरिंग विद दैट गाय कॉल्ड डैन बिल्जेरियन, जो कि बहुत बड़ा पोकर प्लेयर है, बट वो पोकर से पैसा नहीं बनाता, मेक्स मनी विद अदर स्टफ, इज ए रिच गाय, और he has a rich dad who is in jail. So they are partnering with this international guy who his primary business is cannabis and CBD oil. These are all his primary business. He has a company called Ignite, and वो primary business वही है. And ये खुल्लम खुल्ला 2019 में, ये मैंने पहले भी लास्ट वीक भी बात किया था इसके ऊपर, बट मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगी आज. So खुल्लम खुल्ला they're doing business with this guy, and this is happening in 2019, okay, September, October time. And they are talking about expanding their business, and hopefully, because you know that even today CBD and all is not legal in India, right? But they're talking about expanding their business with all this stuff. And you can clearly see what is NCB doing. What NCB is, doesn't have YouTube videos, like they can't see YouTube videos, they can clearly see, right? This is live or repeat? No, this is live, Freeze. This is the one I wanted to do in the morning, but मेरा तबीयत आज बहुत खराब है, तो मैं अभी कर रही हूँ. मुझे पता है कोई जागा हुआ नहीं रहेगा, बट आई थॉट कि मैं जो आज सब डिस्कस करने वाली थी वो सब कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ डिस्कशन आज. So I was talking about Dan Bilzerian. So I'm going to show you guys who this guy is, which you guys have already seen. A lot of them have shared, but मैं भी आपको दिखा देती हूँ क्या फर्क पड़ता है, right? No, and you didn't even inform me. I informed on the Twitter, but I had already told you that I was doing this today, right? On Dino and all that stuff. This was something I had planned last week. I was going to do that today, but मैं फ्रीज आप लेट ज्वाइन हुए, बट मैं जैसे बोली, मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी, आज मेरा तबीयत बहुत खराब है. अभी भी मैं बहुत लॉन्ग ब्रेथ ले रही हूँ. आई एम फीलिंग फीवरिश एंड स्वेटिंग एंड एवरीथिंग, बट आई एम स्टिल लाइक डूइंग इट आफ्टर माय वैक्सीन. I think I haven't spoken to you from yesterday, so you didn't know about this. I took my vaccine yesterday. तो मेरा थोड़ा तबीयत आज सुबह से बहुत ज्यादा ही खराब है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे खराब है, इसीलिए इस टाइम पे लाइव आई, बिकॉज आज मुझे कंप्लीट करना था ये. So okay, so what was I telling? And मैं किसी को इतना लेने वाली नहीं थी StreamYard करके, so that's why I didn't really, I just put it on Twitter before I came, that's all. So let's open up. But अगर आप जागे हुए हैं, Freeze, you can still come on. I can send you the link and you can still come on. I'm going to talk about Dan, and I'm going to talk about next about वाधवान, जो हमने actually, if you guys remember, अगर वरुण के साथ जो हमने सेशन किया था क्वान और कॉर्नरस्टोन के ऊपर, हमने ऑलरेडी वाधवान के ऊपर बात किया था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डीनो, डैन, वाधवान सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे. और ये मैं प्रीवियस सेशन में लास्ट वीक की बात कर चुकी हूँ, बट सिर्फ मैंने बात किया है, उसको दिखाया नहीं है, तो इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. सो डू यू वांट टू कम ऑन, फ्रीज? होल्ड ऑन, वेयर इज द StreamYard का लिंक? You can still come on. I have 2 more topics to kind of finish that, and then after that I can end the stream. But I link डाल रही हूँ so that by the time I complete these 2 more connections, you can come on. So anybody who wishes to come on, they can come on, क्योंकि अभी तो कितना 1 घंटा हो गया. Okay, so you guys can come on. Basically हमने tweets के बारे में तो important था, वो बात कर लिया हमने. तो now let me show you guys. और क्या, अच्छा, I keep getting confused, इसलिए मैं comments नहीं देखती हूँ. Sorry, you're not feeling well after vaccine. Yes, New York traveler, yes. वैक्सीन के बाद आज मेरा बहुत बुरा हाल है. सेकेंड डोज के बाद, फर्स्ट डोज में कुछ नहीं हुआ था, बट सेकेंड डोज रियली बैड. तो अभी भी मेरा हेडेक हो रहा है, बट बैठी हूँ कि आज कंप्लीट कर दूं करके.
So let me go ahead and show you guys now this guy about Dan. I'm going to mute it. No, actually no, I have to not mute it. I have to show you guys because he clearly मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि NCB क्या कर रहा है करके, right? So let me show you guys. Share screen. कहाँ गया ये? Which is the one वहाँ जो बात कर रहा है वो? I think it is this one. Sonal is saying hats off to you. I couldn't even function. Exactly. Actually मेरा सुबह से वही हाल है सोनल. मैं फंक्शन नहीं, मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी. मैं वहीं पे फोन देख देख के ट्वीट कर रही थी और सिर्फ ट्वीट देखा मैंने और कुछ भी इसलिए देख नहीं पाई. एंड नाउ आल्सो आई फील वेरी feverish and पूरा body ache हो रहा है, like full body ache. I don't know how I even got ready to do this, but that is why like whole morning I was not able to do anything. I was just laying around and feeling tired, and I walk करने भी मुश्किल हो रहा था. मुझे एक स्टेप लेने में भी ना मुझे लग रहा था इतना हेवी हो रहा है like. तो अभी भी ऐसी हाल है. I'm still taking long breaths, but it's fine. Before my sun goes down, I wanted to complete this. Okay, so let me show you guys this one. Okay. So I'm going to give volume here because I want you guys to listen to this. कि ये clearly बात कर रहे हैं CBD के ऊपर. ये clearly if you focus, he'll say कि CBD जो यहाँ पे इतना legal नहीं है, but hopefully you know it'll have more potential ये वो करके. And ये Life Pools जो है ये शायद इसका brand है. ये जो आदमी यहाँ बैठा है डायनासोर का brand है वो. So let me play that. Honestly, you know, I don't have a ton of background on that. You know, Mike, would you want to answer that? Well, we got the Life Pools guy. Yeah, I mean, you know, look, at the end of the day, I think what it does for us is, and for Dan as well, is that gaming is, as you know, the fantasy space is blowing up. Dan's always been one to be fairly ahead of the trends, ahead of the curves, and being forefront of movements that are happening, whether it's social media. Alistair. सुनाई दे रहा है, right? You've seen the growth, Guys? I think, in the fantasy space in the last couple of years. Thank you, Sonal. There's some big players out there. I mean, I made my money gambling, so that was So he understands what's the closest thing that we can do in this country is skill gaming, right? So skill gaming is fantasy sports, poker, rummy, certain games that you know are considered games of skill. So obviously, in terms of levels of interest, how my dark circles are covered, CC Plus cream. This is my perfect foundation. I love that I can. In the associations, I think what we look at is what his interests are. This deal's very, very new. It's very, very nascent. It's just happened. Dan's obviously very busy. 100 other things that he does do. So more details between us to be sort of discussed on, more about the product, more about the brand. His team, obviously, as most organizations do. But we've got someone that said they structure the deals, and that's been done by his team. But look, what's the answer? The simple answer is this: what's going to benefit him? Let's make some money. It's business. At the end of the day, So what's going to benefit him? His benefit is let's make some money. That's it. Exactly. That's all matters. We can sit here and have a great time and launch products, but business is business. For us, Life Pools, we're a business. We have, the ultimate goal is to make it a successful company and continue to grow the company and work with the right team to make sure we do that. So, in simple terms, that's your answer. Hi, I'm Shaurya from Just Obey. My question is for Dan. Cannabis is not legal in India, but if you had to introduce Ignite to the Indian market, how would you do that? So did you listen to her question? She said that cannabis is not legal in India, right? So if you have to introduce your products, जो कि Ignite, उसका जो company का नाम है वो Ignite है. If you have to introduce your company products here in India, how are you going to do it? Because cannabis is not legal, right? That's exactly correct question पूछ रही है. So look at his answer. Well, we've got merch, we've got CBD, nicotine, so I think there's other pieces that are legal, and I think cannabis can be legal worldwide. It's just a matter of time. I think it's more about the acceptance from the market. I mean, listen, the world's going to accept it because at the end of the day, there's no toxicity limit. You can't die from cannabis. I mean, alcohol kills, so many people all the time. It's just, if
people a little backwards with their thought process on cannabis, but there's tons of health benefits. It's growing all over India. I mean, naturally. So it's a plant. It shouldn't be illegal. I mean, that's my. So basically, it's trying to say that it is growing because it's growing all over India, which is also true, I guess. तो ये कभी ना कभी तो लीगली हो जाएगा. That's what he's trying to say about CBD. कि CBD है तो क्योंकि CBD here in US is known to be used for anxiety, for medicinal purpose, whatever. But in India it is still illegal. That is why I'm telling ये लोग बैठ के ये खुद बोल रहा है कि ठीक है कैनबिस अगर यूज नहीं कर सकते, मैं कैनबिस प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकता, बट मेरे जो इग्नाइट कंपनी का है वहाँ उनका मर्चेंडाइज है, उनका CBD है, तो वो तो प्रमोट कर सकता हूँ. दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, क्योंकि CBD इज एवरीवेयर, इट इज वेरी नेचुरल, इट्स अ प्लांट, राइट? सो प्लांट से डराइव होता है वो. सो इज गिविंग दैट सेम एक्सप्लेनेशन जो यूएस में है, जबकि इंडिया में क्लियरली समीर वांकेडे जी ने हमें कहा कि इट इज इलीगल इन इंडिया. सो अगर वो बात है तो ये वीडियो है 2019 का. So what is NCB doing? Why NCB didn't summon Dino Moria with regards to these things when he is doing business with all this, right? Clearly selling these their merchandise, yeah, partnering with them and selling CBD oil ka stuff and everything. So why are they not summoning these people? So that was my question on this. Okay, now let me show you guys. Actually, let's stop sharing this. And it is, people are dumb saying CBD and weed have good benefits. Yeah, exactly, Nandini. You might not die from CBD, but will affect your mental health, which can destroy you. Correct. New normal, exactly. That is what he's telling. ये new normal हो जाएगा, right? So this is what the youth of our country, I mean, I should not say youth. Dino कौन सा youth है अभी? Dinosaur is not anymore a youth, but this is what they're trying to provide. And if you see, इसका जो footsteps है ना, ये भी वही है. ये भी एक बॉडी बिल्डर की तरह है, पोकर खेलता है, और देन ये सब उसका जो कंपनी है उससे पैसा बनाता है. ऐसा कुछ नहीं है. उसका बाप जो है वो बहुत रिच था, उसके बहुत सारे ट्रस्ट फंड थे जो इसको मिला था. अभी रिसेंट न्यूज में ही इज नोन एज वन ऑफ द frauds of Instagram because he's lost all his money. The same Dan guy, I'll show you another video. He's lost all his money and now ये मैं बोल रही हूँ 2-3 months की बात है before. Okay, this guy has lost all his money. Why do you think this guy is trying to partner with somebody in India, trying to do all those international things and all? कहीं ना कहीं से कुछ कर ले, because उसका इतना बड़ा नाम है, so people will come for it, right? So that is why these people will trap these people there. And the people in India, they are trying to promote all this to youth. So socho, it is very hard for us to get like a youth like SSR in future, because these are the things that are going to be in future in India. Nandini is saying anything that changes your mental state is bad. Yeah, deal with he has no shame for rule of law of country. Correct. Law of the land says otherwise you free. Yeah. Nandini, I have a close family member who was chronic weed user and he has gotten help and gotten out of it. But man, weed or CBD, they make you lazy and really, yeah, because you're basically ठीक है. एंड यहाँ पे जब सिवियर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एंड दे मे बी डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग यू दैट और समथिंग, बट इसका मिसयूज बहुत होता है ना. दैट इज द थिंग. ये सब चीजें जब मेडिसिनल करके आ जाती है ना, तब भी यहाँ पे भी बहुत मिसयूज होता है उनका. एंड they are always killing you mentally, no matter what, right? All these things, no matter how naturally they're coming from this thing, but they are killing your mental health in a way. Of course, they're killing your body in that way, right? Yeah, and they'll make you so lazy and really kill your life. Yeah, true, Nandini ji. So next, I'm going to show another one where they're talk a little bit about his company. I'm not going to show too much, but थोड़ा सा, because मुझे पता नहीं
कौन सा कॉपीराइट आ जाए यहाँ पे, नहीं तो Ashnur is saying studies have proven in certain people it triggers other mental issues, right? Activates a dormant gene. The severity can range and scientifically proven. Schizophrenia. Yeah. Okay, let me continue because my analysis not feeling too good. I want to finish the analysis. I want to finish showing you some stuff. So let's show. I'm going to show you this another video of this guy. Mind altercation has severe side effects, right, Sri Ganesh? मैं एक और ये share screen. The only reason I showed you that video is because I wanted to show you guys that clearly these people are sitting there talking about these things that are illegal in India, right? And nobody cares about it. Now I'm going to share with you guys another one of his video. जहाँ पे this I don't know if I'll get copyright or something, so maybe I would like play it too much, but this is somebody who has done it telling that he is the biggest fraud on Instagram. Who is this guy? Okay, so little bit I'll play here. Cannabis brand Dan Bilzerian launched the company Ignite, selling everything from cannabis products to clothing, vapes, and beverages. This fucking guy was plastering his stupid goat logo on anything he could get his greasy fingers on. So you saw that, right? So somebody answered to me कि ये जो आपने देखा पानी बेच रहा है, मर्चेंडाइज बेच रहा है, एंड ये जो चीजें बेच रहा है, राइट? कौन है जो ये सेम फॉर्मूला एक बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर इंडिया में भी जो अपना रहा है सेम फॉर्मूला, कौन है? कैन यू आंसर मी दैट? इट साउंड्स वेरी सिमिलर, राइट, to the bodybuilder that we all know about, Jeera Soda, right? So basically ये उसी के footsteps पे काम कर रहा है अभी. Same way like how this Dan guy, छतरी नहीं Sonal, I'm talking about the Jeera Soda guy. He's also same thing, right? He's just a bodybuilder, and bodybuilder, okay, देखो कैसे पैसा बना रहा है, कहाँ से पैसा बना रहा है, right? सो बेसिकली ये लोग कैसे बना रहे हैं सब पैसा, बिकॉज सब जगह जिम खोलते हैं, सब कनेक्शन है इनका, पीछे से क्या क्या काम करते हैं हमें पता भी नहीं है. हमें सिर्फ पता है कि हम इतना बड़ा लाइफस्टाइल देख रहे हैं उनका कि ऊपर से नीचे तक लुई विटान एंड सब कुछ ब्रांडेड, वही देख के हम लोग सोचे हाँ कितना अच्छा लाइफ है, वन लाइफ. बट दिस इज व्हाट दीस गाइज आल्सो फॉलो, सेम थिंग एज what this guy is following. इसका कंपनी है जिसमें he has only few products, right? CBD हो, cannabis हो, उसका merchandise हो, और वो water. So जो मिल रहा है वहां पे उसका लोगो डाल रहा है बस वो. And now that guy is in trouble with his business यहाँ पे. Jeera Soda Kanyas, exactly. And he is following the same thing, क्योंकि ये पीछे से बहुत कुछ काम करते हैं जो हमें पता नहीं चलता है. That's how they make their money. ये जो आगे दिखाते हैं ये सिर्फ बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है, बस शेल कंपनीज होते हैं. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू शो. नाउ लेट अस मेक दिस another connection which actually we have already talked about this guy in Varun's session, like Freeze and we have already talked about this guy, and that is the guy Vadhavan, right? Baba Vadhavan, जो दो brothers है, he is also called as Baba Divan, I think. तो मैं उसका थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो यहाँ कैसे कनेक्ट हो रहा है. देखो हमने क्वान और कॉर्नरस्टोन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, यू कैन गो वॉच इट स्टिल ऑन माय चैनल आल्सो. वहां पे हमने दिखाया था कि जो शाहरुख खान का, जो गौरी खान का जो हैलोवीन पार्टी था, उसमें यू सी दिस वाधवान गाय काइंड ऑफ, you will see it's very fishy, that scene, right? The way he takes Sushant in his car and he leaves and all. So something might have happened in that Halloween party, and these are all people who are very close to the Khans, whether it's Shah Rukh Khan, whether it's Salman Khan, right? Is Salman Khan ka खास बंदा है. So, and these people, both the people, I think like how Freeze had told, I think last session, that they are in jail right now, both the brothers. So this guy, you will see that connection उसका यहाँ पे भी आता है.
इसका मतलब ये जो सारे ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये सेम लोग होते हैं, राइट? सो उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ये वीडियो शेयर करके दिखाती हूँ. आई थिंक आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ म्यूट द वीडियो and I'll talk about the people you see in there, some important people that we see. And freeze, if you're watching, you can come on. मैंने लिंक शेयर किया है. अरे कहाँ चला गया मेरा शेयर? अगर आप एक्चुअली आप इस वक्त उठे हैं, वही सरप्राइज हो रहा है मुझे, क्योंकि आपका टाइमिंग्स डिफरेंट होता है थोड़ा. बट oh my god, what happened? मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ हो गया. Okay, it is connected. What happened? Okay, so let me share, you guys. पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया मेरा इंटरनेट में. Let me share this another video with you guys where I'm going to show you this connection with this guy. Okay, so ये मैं म्यूट कर दूंगी. और ये देखो, ये सेम टाइम में है. ओके, वो जो पहले एक वीडियो दिखा रही थी मैं आपको, सेम टाइम का वीडियो है जहाँ पे ये लोग अंदर आ रहे हैं, कार से अंदर आ रहे हैं, राइट? तो यू विल सी, ये जो है, ये है वो वाधवान. He is the same guy receiving Dan and Dino. Okay, so you can see how full circle these people are with each other. Let me go back to the stream to see कि क्या stream में दिख रहा है. Yes, दिख रहा है. So you can see how full circle they come, right? So this guy is only surrounded. तो ये अंदर जा रहे थे तब का वीडियो है. एंड यू कैन सी कि हाउ दिस सेम गाय वाधवान is the one who is receiving him. Right? ये वाला बंदा, ये वाला बंदा. तो यही सेम बंदा है जो सुशांत सिंह के साथ वो गौरी कांत के पार्टी में भी था. ओके, सो एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू kind of forward and show you guys other people who you never see them. They've all kind of disappeared, okay? But you see them going to this party. So that shows कि ये लोग पीछे से पता नहीं ये लड़कियों से क्या क्या करवाते हैं ये लोग. This girl, if you remember, she was in Big Boss. This is Mandana Karimi. She had come once in Big Boss, and I think उसने क्या कूल है में काम किया था, एक मूवी किया था शायद. उसके बाद तो kind of disappear हो गई है. But you see these kind of girls always in their circle, in Salman circle. You'll see them in Salman circle क्योंकि इनको कुछ ना कुछ काम देते होंगे ये लोग, यही काम करते होंगे ये लोग. So you see her here, and then you see this girl जो कि if you remember नीतू याकू, ये भी कुछ movies की थी, उसके बाद गायब. So again you see her here. So all the actresses that kind of disappear from movies, पता नहीं उनको और कुछ होता नहीं है तो शायद इनको कुछ कुछ काम में लगा देते हैं. फिर यू सी दिस गाय हु इज निकेत तंदीर, जो कि सलमान खान का बहुत ही क्लोज, ही वाज आल्सो देयर इन बिग बॉस बिकॉज ऑफ सलमान खान, एंड ये बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है उनका. ओके, सो यू सी दैट गाय देयर, एंड यू नो ही नोस मंदना करीमी ऑफ कोर्स. सो यू विल सी द सेम सर्कल. नाउ यहाँ पे और कोई है जो एंटर कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. देयर, ओके, ये है डीनो मोरिया's ब्रदर. ओके, दैट्स डीनो's ब्रदर विथ अदूना अख्तर. ऑफ कोर्स वो अभी तो अख्तर नहीं है, आई थिंक ये इसके साथ है. एंड आई डोंट नो इफ दे आर मैरिड और एनीथिंग, बट दे आर टुगेदर. सो शी इज विथ डीनो's ब्रदर, राइट? एंड ऑफ कोर्स डीनो इन ये सब चीजों में इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स उसका भाई भी वही काम कर रहा होगा, राइट? सो these are the people that you see again. So this
guy again. Let's focus back. Oh, wait. I felt like I saw this guy also somewhere. This guy. Was he seen in the other video too? I'm trying to remember. No. ये शायद Dan का कोई बंदा होगा. So this guy, okay. Now let me stop sharing this and let me show you guys another video of Sushant. Guys, I had some glitch in this thing, but are you guys able to see what I'm sharing? Please tell me if you are able to see my screen, because I'm sharing another video right now. I'm feeling so tired, guys. बहुत ज़्यादा ही टायर्ड लग रहा है. ओके, तो ये जो वीडियो था कोरी खान के पार्टी का दिखा रही हूँ आपको. ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सेम बंदा. मैंने म्यूट किया है इसको. सो यू सी द सेम गाय, राइट. ये वाला वाधवान, ये उसके पार्टी से इसको बाहर ला रहे हैं सुशांत को. एंड ये वीडियो भी हमने ऑलरेडी 1 मंथ पहले ही हमने शेयर किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट वाधवान एंड सूरज पंचोली एंड ऑल दैट ऑन वरुण शो, जो मेरे चैनल पे भी है. सो यू कैन गो वॉच दैट. इट्स द क्वान एंड कॉर्नरस्टोन videos. So you see that he actually goes with him. He takes him with him. So what was going on here, right? कुछ तो पार्टी में हुआ है जो ये साथ में उसको ले जा रहा है, right? And Sushant clearly does not look very comfortable here when you see, right, the way he's going with him. And एक और scene है जहाँ पे you'll actually see the way he puts his hand, see there, and takes him and all, right? तो ये हमने पहले भी देखा था. तो and then he goes away with him. So क्या हुआ था गौरी खान के पार्टी में जो इसको ऐसे ले जा रहे थे, right? So you see that same Vadhavan guy there. Trying to close all the windows here. So 1.5 hour हो गया. So basically, yes, thank you Sonal, you're able to see. Yeah, that's the same way that the Khatri was also doing in Sushant's birthday video. Yes, exactly. I think वो 2017 का जो जनवरी का बर्थडे वीडियो था जहाँ पे कतरी उसको उसी तरह ले जा रहा था. So you can see how full circle आ रहा है, right? वाधवान, डीनो, सलमान, सारा एक ही सर्कल है. How they work together, right? And that guy is in jail right now. I'll show you one more actually. Let me share that. Share screen. And remember that जो भी मैं शेयर कर रही हूँ ना, ये सब जो सोशल मीडिया पे यही शेयर कर रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं. So let me share this news with you guys, where they're talking about the Vadhavan brothers, right? So I think this is one of his brothers. CBI arrests Vadhavan brothers from quarantine at farm house. पता नहीं कौन सी फार्म हाउस की बात कर रहे हैं, उनका फार्म हाउस होगा. This is a news from 2020. Okay, इनका अरेस्ट हुआ था 2020 को. कहाँ है डेट? April of 2020. So just before all this कांड दिशा का and SSR का हुआ था. So यहाँ पे लिखा है कि CBI team on Sunday reached Mahabaleshwar and arrested absconding DHFL promoter Kapil Vadhavan and his brother Dheeraj Vadhavan, alias Baba Deeban, in a fraud case involving S Bank founder Rana Kapoor. The move came after the special CBI court vacated the stay on their arrest on Saturday. Last week, the institutional quarantine of Vadhavans and their staff, who had been traveling from Kandala to Mahabaleshwar in violation of lockdown, ended, and on Thursday they were shifted from Panchagani and placed in a 14-day quarantine. Okay, so basically उनको quarantine में डाल के उसके बाद जेल में डाला शायद. But यहाँ पे let's read more because I see some Anil Deshmukh name here. On April 8, the Vadhavans had managed to travel with the help of a letter issued by IPS officer Amitabh Gupta,
who was the principal secretary special in the Home Department. Okay, addressing the state of social media on Sunday, Home Minister Anil Deshmukh said additional Chief Secretary Manoj Sonic had submitted the inquiry report on the incident, and the report will now be submitted to CM Uddhav Thackeray. अच्छा, तो सारा वाधवांस तो ठाकरे को जानते होंगे. Without taking names, Deshmukh slammed BJP, saying the party shouldn't politicize the issue. अच्छा, so he is telling कि पार्टी को politicize नहीं करना था ये issue. सारे politician तो सब जगह मिले हुए हैं and what they're talking about, and we know where Anil Deshmukh का situation क्या है अभी. The Vadhavans will be produced before court on Monday for remand here. तो ये अभी भी जेल में है क्या वो पता नहीं है मुझे एक्चुअली, या बाहर आ गए हैं. Anyway, so that was the news from April 2020. So CBI had arrested them, but now I'm not sure, I haven't checked that अभी हालत क्या है, क्या अभी भी arrested है, क्या है पता नहीं. So now let me go back. So we established that connection, right? Now let me show you another one, जो कि बाबा दीवान का मैं दिखाती हूँ आपको. ये बाबा दीवान का एक दिवाली पार्टी है. I'm not sure which one this is. I think it is 2018 का पार्टी, but I could be wrong because it looks like it's 2018 or 2019. But वहाँ पे बॉलीवुड हंगामा में ना डेट नहीं दिखा रहा है. So I can't be completely sure, but I'm going to share this with you guys so that I can show you who was there in that party. So share screen. Okay, so you guys are able to see this, right? Sonal, hi Ja. The guy is intimidating. Yes, exactly, Sonal. That's the same way that Kadri guy was doing in Sushant Pioteya. I think I read that already. Okay, so you can see the screen that ये दीवान का पार्टी था, कुछ बर्थडे दिवाली बैश था. यहाँ पे लिखा है सलमान खान एंड अदर्स ग्रेस बाबा दीवान्स दिवाली बैश. तो मुझे लग रहा है ये either 2018 या 2019 का है. नाउ यहाँ सब देख रही हूँ, डेट नहीं बता रहा है यहाँ पे. इट ओनली सेज लास्ट अपडेटेड विच इज शोइंग टुडेज डेट एक्चुअली. ये तो जून 26 दिखा रहा है जो अपडेटेड, बट यहाँ पे क्या डेट है ये नहीं दिखा रहा है. बट देखते जाओ कि कौन कौन था यहाँ पे. ओके, now that's why I'm talking about all these disappearing girls. This is Salman Khan. This is Daisy Shah. With, I think that's Atul Agnihotri, right? That's his Salman's brother-in-law. And this is Baba Siddiqui. कितना हमारा सर्कल कंप्लीट होता है ना, ये सारे सेम चीज सेम लोग होते हैं हर सर्कल में. सो यू कैन सी ये डेसी शाह ये आजकल क्या करती है, who knows, nobody knows. Only thing we know is that she is in Salman circle. ये जैकलिन ये सब उनके सर्कल में है एंड हमेशा उनके प्राइवेट जेट में घूमते रहते हैं बस. जैकलिन ये सब, दैट्स ऑल वी नो. वी हैव नो आइडिया कि ये लोग पैसा कैसे बना रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे. तो ये डेसी शाह जो यहाँ बैठी, because she is a choreographer, right? But I don't see her anywhere else other than her going to gym or other than her in with Salman Khan somewhere. So that's Salman Khan. That's Mika Singh, you see. And then you saw Baba Siddiqui there. Again, Baba Siddiqui का connection वहाँ पे बन गया. क्या बन गया सबको पता है, but मैं just दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि दिखाने से कुछ वैल्यू बढ़ता है, right? प्रूफ का. फिर अगेन वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट जैकी बगनानी, जो उसका वेट लॉस जर्नी का जो कनेक्शन है, इट कनेक्ट्स विद स्टीव पिंटो. सो वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन सम सेशन. आई डोंट रिमेंबर वेयर आई टॉक्ड अबाउट इट, बट वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट. एंड ऑल्सो जैकी बगनानी वाज समवन हु वाज गोइंग टू डू केदारनाथ, बट देन इट वेंट टू सुशांत. सो वी नो दैट वो एक था वहाँ पे, प्रॉब्ली ही डिडंट लाइक सुशांत. So this is their father and mother, Jackie Bagnani का, जो वशु बगनानी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है. ओके, सो उस दिवाली पार्टी की बात करें. नाउ अगेन अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वी सी हियर, हु इज निखिल द्विवेदी, जो कि UBT जो यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड और यूनिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट जो कंपनी है, जो सलमान खान की कंपनीज है, जिसमें पहले वरुण माथुर थे,
but Varun Mathur had moved on to create a company with Sushant, right? But pehle Varun Mathur was also there in these two companies. These two companies are now, actually this guy is also a part of those, because it's owned by Nikhil Dwivedi, this guy, and Amit Dangi, and I think his brother Sanjay Dangi, and Salman Khan. So that's why this guy will be seen everywhere, right? So this guy connects to our that UBT, Cornerstone, Quan, everything. Next, you will be very surprised जो पिक्चर दिखाऊंगी अभी, हाँ आप लोगों को. ये तो आई डोंट केयर अबाउट हिम, आशीष चौधरी, ठीक है. अब देखो कौन आया. ये रही हमारी हीरोइन रिया चक्रवर्ती, जो बाबा दीवान के दिवाली बैश को अटेंड कर रही है. आई मीन ऑफ कोर्स बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टीज में तो ये सब दिखते ही हैं. ये भी दिखी है बहुत बार, इवन 2017 के पार्टी में, 18 के पार्टी में, सारे पार्टी में रिया भी थी बाबा सिद्दीकी के पार्टीज में. एंड नाउ यू कैन सी हर हियर इन बाबा दीवान, ओके, वाधवन के दिवाली बैश. नाउ इफ एनीबडी कैन टेल मी कि ये दिवाली बैश 2018 का था या 2019 का, प्लीज लेट मी नो, या उससे भी पुराना था. There is Sohail Khan. And there is another of our heroes here, right? Another sewer that we are looking at is right here. So you can see ये लोग हर एक पार्टी में हर जगह पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, okay? Because ये सारे लोग, whether it is वाधवान, whether it is बाबा सिद्दीकी, इन सब के पार्टी में ये लोग सेम लोग हैं जो मिलते हैं, या सोहेल खान का पार्टी हो. एंड मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, जैसे रिया चक्रवर्ती का जो 2018 दिसंबर का वीडियो जो वेरीफाइड है, 2018 दिसंबर में वो अर्पिता खान के साथ एक ही कार में बैठ के सोहेल के सन के बर्थडे पार्टी में गई थी, राइट? एंड जस्ट इन 2019 from January she has started dating Sushant Singh, okay? So you can make all the connections everywhere. And उस पार्टी में भी you see बाबा सिद्दीकी son, everybody going in that party too. So ये लोग सेम पार्टीज में सेम सर्कल है जो मिलते हैं. So stop sharing. So that is what I wanted to show you guys. So